in terms of how the liquid waste management should be managed. Then we will give you a brief of the toilet typology which is prevalent in rural area, just because toilet typology is the base on which the FSM planning and implementation is embedded. So it is very important that we understand the correct way of toilet typology updation. Also, we will be talking about what are the technologies available for fecal sludge management. We will be showing you all the IMIS modules also, which are available to report the progress, so that whatever topic we are covering, we have the relevant module, and the states and the union territories will get to know that which module to use. Ashish, we request states to please not share anything on the screen. Kindly refrain from sharing anything. Thank you. Lastly, we will be talking about the state FSM policy. Next slide. आप मुझे ये दे दीजिए. I will take control. Thank you. Okay. Request states to please confirm कि आपको presentation visible है. Anyone can just unmute and let us know कि Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम. एक और आप सबसे हमारा अनुरोध है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग बीच बीच में पॉज लेंगे, बिकॉज हम इस जो एफर्ट हम आज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्टेट्स को उसका पूरा फायदा हो. हमारी यूनियन टेरिटरीज जो भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरा इस पे ध्यान दें, और आपके जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको प्लीज होल्ड करके रखें, ताकि हम आपके क्वेश्चन का भी आंसर देंगे. आपका कोई भी डाउट है टेक्निकल या फिर IMIS रिलेटेड, वी विल बी गेटिंग बैक टू यू. तो जस्ट हम लोग अभी बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे. रूरल सिनेरियो में देयर इज अ डिफरेंस. वी डोंट हैव सीवर नेटवर्क देयर, सीवर लाइन नहीं होती है, इसलिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज ग्रे वाटर एंड अनदर इज ब्लैक वाटर. Waste water which is generated from kitchen bathroom, that together is known as grey water, and the waste water which is coming, which is inclusive of urine, toilet flushing and feces, and specific wastewater of the toilet is known as black water. Right now this technical session is focused ऑन ब्लैक वाटर मैनेजमेंट. आज हम जो भी बातचीत करेंगे, आपको जो भी ओरिएंट करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग ब्लैक वाटर मैनेजमेंट और फीकल स्लज मैनेजमेंट. तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस स्लाइड. In twin pit based toilets, as per Swachh Bharat Mission Gramin, we promote or we recommend all the new toilets whatever are constructed to be of twin pit based technology, because of the benefit कि twin pit टॉयलेट के अंदर इन सीटू ट्रीटमेंट से फीकल स्लज अपने आप मन्योर में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. So rural area में this typology is very much prevalent and is recommended also. We don't need anything to do once the toilet typology is twin pit based. Also, fecal sludge management specific, this term is used for the toilets which are septic tank or single pit based. You can see a value chain also in this slide. So when we say fecal sludge management, it is not construction of rural FSTP. It is not buying the truck to get the mechanized desludging, or it is a value chain which we have to ensure that your containment, that is your toilet typology, is correct. Emptying is done through mechanized method. There is no leakage or spillage on ground when we are emptying and transporting it to the designated facility. Also, the treatment is proper. So I would request all the
officials to please pay attention on this slide, because this is the slide which will give you the planning strategy, how we should have to do our planning for fecal sludge management. This is a very, very important and significant slide. So if your toilet typology, आपके यहाँ पे जो टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड हैं या रिपोर्टेड हैं, if they are single pit based, it is recommended to retrofit them to twin pit based toilets. Also, if septic tank or single pit based toilets which are not retrofit feasible, those require further planning. Swachh Bharat Mission Grameen Fund, you can see yellow marked indicator on the slide. It is available at the rate of 230 per capita for construction of rural FSTP, as well as for urban rural convergence for construction of a co-treatment facility also. तो न्यू रूरल एफएसटीपी एक विलेज के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होती है और क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए प्लान हो सकता है. आपने अपने एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ने अपना प्लानिंग किया है अपनी ग्राउंड असेसमेंट के आधार पे कि आपको कितने रूरल एफएसटीपी इस साल में बनाने हैं, जिसके लिए अवेलेबल फंड फ्रॉम एसबीएमजी इज अवेलेबल. ऑल्सो फ्यू स्टेट्स have also planned for urban rural convergence, कि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाकर अर्बन डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्ज करके जो 230 पर कैपिटा अवेलेबल है एसबीएमजी का फंड, उसके आधार पे को ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो एग्जिस्टिंग एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या न्यू एसटीपी जो आने वाला है उसके साथ कन्वर्ज करके बनाएंगे. तो ये जो प्लानिंग है नंबर 2 और 3 की, ये आपने ऑलरेडी अपने एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान में की है. तो मेरा रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से कि प्लीज अपने एआईपी जो आपका अप्रूव हुआ है उस प्लान को देखें और उसको आगे एग्जीक्यूशन में लेकर आए. ऑल्सो स्टेट्स और यूटीज को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ने मैनुअल एफएसएम प्लान एक पूरा डेवलप करके दिया है in terms of a booklet. There is a toolkit available for district level officials also on FSM. This toolkit gives you idea that at what level in the district, at block, what are the roles and responsibilities of the officials while doing the planning as well as on the implementation. This financial norm, you can see a DO letter also on this slide, which narrates that 230 per capita funding is available under Swachh Bharat Mission Grameen for fecal sludge management. ये फंडिंग रूरल एफएसटीपी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए भी अवेलेबल है, और को ट्रीटमेंट फैसिलिटी अगर आप अर्बन के साथ कन्वर्ज करके एसटीपी पे लगाना चाहते हैं उसके लिए भी अवेलेबल है. ऑल्सो सिंगल पिट को ट्विन पिट में कन्वर्ट करने के लिए एंड टू हैव अ सेप्टिक टैंक अलोंग विद अ सोप पिट, उसके लिए भी 5000 आपको 15th एफसी या 16th एफसी से अवेलेबल है. वी विल जस्ट फ्लिप दी स्लाइड्स. टॉयलेट टाइपोलॉजी जस्ट हम लोग आपको वी जस्ट गिव यू अ idea that in rural area what kind of toilets you will see in your state and UT. So first type which is recommended type is twin pit. ये दो गड्ढों का शौचालय जो है एक जंक्शन चैम्बर के साथ आता है. The junction chamber functions for transitioning of when the first pit is already filled and we have to transition to the second pit. So we have to give a specific resting time of 1 year or more to dry out the sludge which is collected in the first pit, and after that the second pit is functional. So this is the twin pit based toilet. Also, there is a in our manual there is a specific guidance which is given for construction of a twin pit based toilet, like in terms of the soil condition.
because it functions on the concept of permeability in the soil. So it is important that your soil is permeable to have twin pit in that particular zone. So twin pit based toilet is recommended, and if semi-permeable soil is there, then a modified twin pit design is also available in the manual. Apart from that, in terms of water table also, if water table is beyond 3 meter, then only twin pit is recommended. And if there is a permanent water table, then there are other toilets which can be constructed like eco sand, bio gas linked, or a septic tank. Also, kindly pay attention. This is specific and very important guidance in terms of the ideal distance between a toilet pit, any type, or a water source. So, if the water table is less than 3 meter, then it is recommended to have a minimum horizon this distance of 10 meter between the toilet pit and the water source. Also, if it is more than 3 meter, then the 3 meter distance between the toilet pit and the water source can serve. Second type of typology is single pit based toilets. In the recent instruction which is issued to states and union territories, the Swachh Bharat Mission Grameen Fund in the present year is only available to construct twin pit based toilets and not available for single pit toilets also. It is instructed to all the states and UTs to please do retrofitting of single pit to twin pit based toilets. These are the specific steps which are given for retrofitting. सबसे पहले आपको उस जो शौचालय है उसका इस्तेमाल बंद करना है 1 या 2 दिन के बाद. उसके बाद टॉयलेट को फ्लश करके उसके साथ एक एडिशनल पिट 1 मीटर बाय 1 मीटर का डक करके उस सिंगल पिट को ट्विन पिट में कन्वर्ट करना है. And also Y junction is mandatory because Y junction एक important part है twin pit based toilet का उसकी proper functioning के लिए, scientific functioning के लिए. Septic tank जो है वो double chambered हॉरिजॉन्टल टैंक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी स्लज एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है. ऑल्सो इट इज मैंडेटरी टू डीस्लज सेप्टिक टैंक आफ्टर एवरी 3 ईयर. सो यू कैन सी इन द स्लाइड ऑल्सो कुछ टाइम के बाद दिस सेप्टिक टैंक will stop functioning because there is a accumulation of sludge. So what we are talking about fecal sludge management is इसी sludge को डीस्लज करके मैकेनाइज तरीके से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पे लेकर उसे जाकर जो है ट्रीटमेंट किया जाता है. ऑल्सो septic tank is functional and is scientific only when it is having a soak pit along with it because soak pit में ही आपका इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट होता है. We have also given option of other toilets also which do in situ treatment like eco sand is prevalent in Ladakh. This is a toilet which has like double pit where urine and feces are collected separately. Water is not used here. In place of water, ash is put on this and the decomposed matter is accumulated under the toilet. Also, bio toilets are also prevalent which also do in situ treatment. हम लोग आपको एक बहुत ही छोटा सा एक वीडियो दिखाएंगे ऑन द ट्विन पिट बेस्ड टॉयलेट. अरे देखो नरेश, कैसे इनके सेप्टिक टैंक का पानी सीधे नाली में जा रहा है. अरे भाई, इससे तो बीमारियां फैल सकती हैं. साथ ही जल स्रोत तथा भूजल भी दूषित हो सकते हैं. तो इसे रोकने का कोई तरीका है क्या? हाँ हाँ महेंद्र भाई, बिल्कुल है. सेप्टिक टैंक के साथ सोक पिट बनवाना जरूरी है. ट्विन पिट बनवा लो तो और भी बढ़िया है. क्या ये ट्विन पिट कोई नई तकनीक है? महेंद्र भाई, ट्विन पिट एक लाभकारी तकनीक है. हमारे गांव में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी शौचालय ट्विन पिट से बने हैं. इनसे किसी भी तरह का गंदा पानी नालियों में नहीं आता तथा सेप्टिक टैंक की तरह इन्हें मशीन से खाली भी नहीं करवाना पड़ता है. अरे वाह नरेश भाई, इस ट्विन पिट के बारे में और कुछ बताओ. महेंद्र भैया, ट्विन पिट के बारे में विस्तार से जानकारी तो सरपंच जी ही दे सकते हैं. तो चलते हैं उन्हीं के पास. राम राम सरपंच जी. राम राम भैया, हम तो ठीक है. तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सरपंच जी,
महेंद्र को आपसे ट्विन पिट की जानकारी दिलवाने के लिए लाए हैं। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम किए तुम नरेश। ट्विन पिट टॉयलेट द्वारा मलीय कचरा प्रबंधन करना अत्यंत सरल है। इसके द्वारा आप मल को खाद के रूप में परिवर्तित कर खेत में उपयोग कर सकते हैं। सरपंच जी, ट्विन पिट काम कैसे करता है? देखो महेंद्र, हमारी भूमि अथवा मिट्टी हमेशा से ही फिल्टर का काम करती रही है। ट्विन पिट में भी इसी मिट्टी के गुणों का उपयोग कर मल का उचित उपचार होता है। मल में उपस्थित ठोस कचरा पिट में ही रुक जाता है, फिर पिट में उपस्थित दूषित जल मिट्टी से होकर गुजरता है, जहां पर फिल्ट्रेशन तथा मिट्टी की सतह सोख लिए जाने से उसका उपचार होता है। इस प्रक्रिया से रोग पैदा करने वाले रोगाणु भी खत्म हो जाते हैं। पर सरपंच जी, ट्विन पिट में खाद कैसे तैयार होता है? अरे महेंद्र, समय के साथ ट्विन पिट शौचालय में एकत्रित ठोस मल खाद में बदल जाता है, जिसमें ना कोई रोग पैदा करने वाले जीव होते हैं, ना कोई दुर्गंध आती है। इस प्रक्रिया के लिए गर्म जलवायु में मल को गड्ढे में 1 वर्ष तक रखना चाहिए, जबकि ठंडे क्षेत्रों में 2 साल का सुझाव दिया जाता है। 2 साल बाद परिवार के सदस्य स्वयं ही इसे खाली करके खेत में उपयोग कर सकते हैं। तो सरपंच जी, ट्विन पिट बनाते समय जल स्रोतों से दूरी का भी ध्यान रखना है क्या? हाँ नरेश, पीने के पानी के स्रोत जैसे हैंडपंप, कुआं, नदी, तालाब आदि से सुरक्षित दूरी रखना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ट्विन पिट को उन क्षेत्रों में प्रमोट किया गया है जहां पर भूजल 3 मीटर से नीचे हो। ध्यान रहे, ये शौचालय किसी भी पीने के पानी के स्रोत के पास ना हो। अरे वाह सरपंच जी, ट्विन पिट टॉयलेट तो बहुत ही सुविधाजनक है और इसे खाली करने के लिए पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं। हाँ महेंद्र, सही कहा। चलो ट्विन पिट टॉयलेट बनाएं और गांव को स्वच्छ व समृद्ध बनाएं। In the recent review meetings, we have requested all the states and UTs to please complete their toilet typology updation. Please see the slide right now. This is the module 67C, which is open till 15th of July for all the states and UTs to update their toilet typology. This is an important step because of which you will be able to do your FSM planning and implementation. Because if your base that in a village what kind of toilet exists, like you can see on the slide, it captures, this module capture your total households, your total IAHL, then twin pit, single pit, septic tank with soak pit, without soak pit, and other. In other, all eco-sand, bio toilet, everything is captured. So you have to update your toilet typology. This module will be closed on 15th of July for updation. Regarding this, an advisory was also issued. So before we go to the technologies, एक मिनट आशीष जी presentation हटा दीजिए. So any question till here in terms of toilet typology updation or any question related to what we have just run through? Good afternoon, ma'am, from Punjab State, ma'am. जी sir. Ma'am, we are trying to complete our toilet typology, but ma'am, moment the ma'am a citizen approves application on Government of India portal, it is approved. It comes into the toilet typology section, ma'am. The figure never goes to zero. It is always increasing, ma'am. This matter has been taken with your ma'am, the MIS team also, ma'am, by our MIS specialist. But ma'am, the issue is still there. It is not being resolved, ma'am. A toilet has been approved on ma'am 23rd June. Ma'am, it is showing in pending as toilet typology, but not the toilet has not been started. Still, it is showing as pending for toilet typology, ma'am. So we are aware about this issue, but you know we have also kind of what is available right now is that if any new toilet is reported, so in terms of physical verification till is the step where the toilet typology required to be updated, but it should not go to column number 5. I spoke to your MIS officer also, so I will take it up with NIC and get it resolved. This is basically a technical glitch in terms of toilet typology updation. Yes, ma'am. Yes, that is a glitch. Sure. Thank you. From Tripura, is there any question?
मैम यस मैम, एक्चुअली हम लोगों के पास PM14 में हम लोगों को अपडेट करना पड़ रहा है। 67C में हम लोगों का कोई पेंडिंग नहीं है। तो वहां पे थोड़ा बहुत वो फाइनेंशियल जो पार्ट है ना, जी उसमें थोड़ा हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है फाइनेंशियल पार्ट को तो ब्लॉक से लेके आने के बाद। हाँ, तो हाँ। हम लोग बस वही आपको क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि अभी जो टॉयलेट टाइपोलॉजी अपडेशन की हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, वो कॉलम नंबर 5 है जो आपने पहले से अपडेट नहीं कर रखी थी। तो वो सिर्फ हाँ कॉलम मैम। नंबर 5 को फोकस करे, पेंडिंग टॉयलेट टाइपोलॉजी फॉर अपडेशन, कॉलम नंबर 5 इन रिपोर्ट 67C1। जो 9 और 10 कॉलम है वो न्यू यस मैम। टॉयलेट का है, और हम ये समझते हैं कि जब तक उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, आपके जियो टैग होने पे वो अपने आप को टॉयलेट रिपोर्ट करता है, बट फिजिकल वेरिफिकेशन वो स्टेप है जहां पे आपको टॉयलेट टाइपोलॉजी अपडेट करने का मौका दिया जाता है। तो वी आर नॉट मॉनिटरिंग 9 एंड 10 विच यू आर टॉकिंग, सो 5 नंबर इज विच शुड बी 0 फॉर यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। कैन वी हैव लक्षदीप प्लीज? यस मैम। सर सर ये सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज अपनी टीम के साथ जो मॉड्यूल 67C है उसमें लक्षद्वीप ने क्या टाइपोलॉजी अपडेट की है उसी के जी जी। आधार पे आपकी कंप्लायंस होगी। अभी हम ये भी डिफाइन करेंगे सर एक एफएसएम कंप्लायंस जो है वो किस तरह से डिक्लेयर होती है। वी विल बी जी शोइंग इट टू यू सर। सो काइंडली सर इफ यू कैन जस्ट review the toilet typology updation in 67C and accordingly please take it up for the compliance in module 36B also sir. मैम, इसमें ये है कि जो टॉयलेट टाइपोलॉजी डाला गया है इसको अभी जिसमें मेरा जो स्टाफ है, मेरे कलीग्स बता रहे थे कि ये रॉन्ग एंट्री है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मैम, हमारे जो आइलैंड्स हैं उनको मैं लेटर लिख के कह रहा हूँ उसको रीवेरीफाई करें, क्योंकि मैं तभी उसके आगे एमनेस्टी को एडिट या कुछ अपडेशन की रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियल है, मैंने अभी नया चार्ज लिया है, वो बता रहे हैं रॉन्ग एंट्री है, पर मैं रॉन्ग एंट्री रीवेरीफाई करा रहा हूँ आइलैंड के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू। उसके बाद मैं इसको फिर रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्ट्री से। ये तो मैम सर टॉयलेट टाइपोलॉजी का है। मैम तो एडिशन या डिलीशन के लिए तो हमारा एक मैम का जो वेरियस आपकी मीटिंग्स हुई हैं उसमें मैम ने बताया ही है कि किस टाइप से हमें एडिशन या डिलीशन करना है। जी तो वो जो फॉर्मेलिटी आप पूरी कंप्लीट करके विद जी डिस्ट्रिक्ट्स इनपुट्स और फिर एमडी भी उसको वेरीफाई करें, जी फिर भेजेंगे तो उसके बाद देन वी विल टेक अ कॉल ऑन जी मैम, नोटेड। दैट। प्रेजेंटेशन लगा दीजिए। एक बार म्यूट करिएगा। So now coming to the technologies in fecal sludge management. So first of all, we'll show you a video of a rural FSTP, fecal sludge treatment plant का जो scientific design और scientific working है. First we will understand it through a video, or maybe we'll come back to video later. Let me just first explain you अब that इस how it functions. So सबसे पहले जो recommended technology है rural FSTP के लिए, fecal sludge treatment plant के लिए, वो है planted brine bed. So you can see first of all when the fecal sludge is collected through a truck, it comes in the rural FSTP, and the hose pipe of the collected tank is connected with the screen chamber. आप सबसे पहले देखिएगा स्क्रीन चैम्बर का काम है सिर्फ सॉलिड वेस्ट को उस फीकल स्लज जो कलेक्टेड है उससे अलग कर देना, ताकि जो सॉलिड वेस्ट उसमें मिक्स्ड है वो उसकी फंक्शनिंग में आगे कोई दिक्कत ना करे।
देन यू कैन सी प्लांटेड ड्राइंग बेड। प्लांटेड ड्राइंग बेड कैसे काम करता है? जो सॉलिड और लिक्विड है उसके सेपरेशन का काम करता है। जो solid part है that will remain on the top, and the liquid part, you can see the blue color arrow also, it will come for treatment in the next chamber. Planted drying bed, what is it? ये एक चैम्बर है जिसमें अलग अलग तरह के स्टोन साइज जो है वो फिल्टर मीडिया की तरह काम करते हैं और उसके ऊपर सॉइल की लेयर डाल दी जाती है। लिक्विड जो यहाँ से सेपरेट हुआ है, इट विल गो टू द नेक्स्ट चैम्बर that is called a anaerobic baffle filter, and then it will pass through horizontal planted gravel filter and finally the polishing pond. It is just important to understand technically that planted drying bed is is recommended when the plant capacity जो आपने प्लान की है वो less than 12 किलोलीटर पर डे है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लांट है इसलिए ये ज्यादा बड़ी कैपेसिटी में काम नहीं करता। बेस्ट सूटेड है जब 12 KLD बिलो कैपेसिटी है और रूरल एरिया में इससे ज्यादा होती भी नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट सूटेड टेक्नोलॉजी। ऑल्सो इट इज I'll just show you that this is how the planted drying bed it function. You can see that there are various graded filter media which are there, and finally you can see the it will go to the plants which are recommended are Canna indica, Phragmites. These are the macrophytes which can withstand various type of pollutant load. That is where these plants are recommended. And finally, anaerobic baffle reactor. It is a 3 to 4 chambered horizontal structure where the baffle walls are there. So liquid जो पास होता है वो इन baffle walls के साथ retention wall की तरह act कर देते हैं, so that the pollutant load will get collected below the sludge. It also require at some point of time cleaning. AB आपका जो ABF है। Finally, the planted gravel filter, it is also a horizontal structure where the liquid treatment will happen. And finally, the polishing pond is there. दूसरी टेक्नोलॉजी इन रूरल FSTP इज अनप्लांटेड ड्राइंग बेड। ओनली डिफरेंस प्लांटेड एंड अनप्लांटेड के बीच में इतना है कि इसमें प्लांट्स नहीं रहते हैं, इट इज अनप्लांटेड, एंड इफ योर डिजाइन कैपेसिटी is greater than 12 KLD, then unplanted drying bed is recommended. Rest everything is similar. Also, because there is no plants to do the extra treatment in planted drying bed, it is unplanted drying bed. So here it is recommended to have a ABR, एक stabilization स्ट्रक्चर प्री ट्रीटमेंट के लिए पहले प्रपोज किया जाता है इन अनप्लांटेड ड्राइंग बेड। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड ओडर इन द प्लांट। आई जस्ट शो यू वन वीडियो जस्ट टू एक्सप्लेन द होल फंक्शनिंग ऑफ रूरल FSTP। अब इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले गाड़ी शौचालय के मल को लेकर FSTP आती है। उसके बाद उसके आउटलेट को स्क्रीनिंग चेंबर के इनलेट से जोड़ा जाता है। स्क्रीनिंग चेंबर मल में मौजूद किसी भी कचरे जैसे कि प्लास्टिक, कपड़ा, सैनिटरी नैपकिन आदि को आगे जाने से रोक लेता है। कार्य करते वक्त ये बहुत जरूरी है कि ऑपरेटर ने PPE किट, मास्क, ग्लव्स और गमबूट्स पहने हों और सुरक्षित तरीके से मल का निष्पादन हो रहा हो। स्क्रीनिंग चेंबर प्लांटेड ड्राइंग बेड यानी PDB से जुड़ा होता है। PDB मल के ठोस एवं द्रव्य पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है। PDB एक विशिष्ट उपचार प्रक्रिया का यूनिट है जिसमें अलग अलग आकार के पत्थरों की वर्टिकल सतह बनी होती है। सबसे ऊपर सैंड लेयर होती है, उसके बाद छोटे पत्थर और सबसे नीचे बड़े पत्थर होते हैं। बड़े पत्थर के साथ साथ ऊपर की ओर केली के पौधे भी लगाए जाते हैं जो कि पानी को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। ये फिल्टर मीडिया एक छन्नी का काम करती है। ठोस मल बेड के ऊपर रह जाता है और द्रव्य फिल्टर्ड मीडिया से होते हुए शुद्धिकरण के लिए आगे की प्रक्रिया में इंटीग्रेटेड सेटलर में चला जाता है। इंटीग्रेटेड सेटलर एंड एनारोबिक फिल्टर एक ऑक्सीजन रहित बंद यूनिट है जिसमें 2 कक्ष एक बैफल वॉल के द्वारा अलग होते हैं।
इंटीग्रेटेड सेटलर एंड एनारोबिक फिल्टर में 90% तक प्रदूषकों को कम किया जाता है। दुर्गंध व रंग हटाने के लिए और दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए जल को कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में लाया जाता है। यह एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर मीडिया है जिसमें अलग अलग आकार के पत्थरों से गुजरकर दूषित जल प्रवाहित होता है। मैक्रोफाइट या जलीय पौधों की मदद से जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जल शुद्ध करने के लिए अनुकूल जीवों को पनपने में मदद करती है। और अंत में पॉलिशिंग पॉन्ड, जहां उपचारित जल को पुनः शुद्धिकरण कर संग्रहित किया जाता है। ये जल को एकत्रित करके रखने के साथ साथ हवा और सूरज की रोशनी से पुनः उसका शुद्धिकरण करता है। पॉलिशिंग पॉन्ड में उपचारित जल का वाटर टेस्टिंग, बीओडी, सीओडी और पैथोजेंस का टेस्ट किया जाता है। पॉलिशिंग पॉन्ड के जल को खेती या बागबानी जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो और सूखे हुए मलकों को कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग के बाद खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। So this was just an explanation of how the rural FSTP function. This is the third technology which is recommended, T-Pro entrenchment. जहाँ rural FSTP is not possible, urban-rural convergence is not possible. It's an isolated village or village panchayat where nothing kind of treatment is not possible. So ये उन villages के लिए recommended है to have T-Pro entrenchment method. It is also a very scientific method, and what is done here is that pits are dug and the fecal sludge which is collected is dumped into those pits. It is covered with the dugout soil, and then proper fencing is also done. So after, just like a twin pit based technology, after a certain time, the fecal sludge which is dumped here will also get converted into manure, which can be used. So D-Pro entrenchment, DRE, is also one technology for isolated villages where nothing is possible. Also, we told you that we recommend urban-rural convergence also to be taken at a scale. So, and certain states and UTs have planned that also. So, urban-rural convergence किस तरह से possible है? We understand sewage treatment, sewage and fecal sludge has different characteristics. Sewage is mix of grey water plus black water. However, fecal sludge is only the digested sludge which is collected from septic tank and pits. So, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में को ट्रीटमेंट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन प्री ट्रीटमेंट बिफोर जो फीकल स्लज कलेक्ट होके आपने एसटीपी पे डंप की है वो आगे ट्रीटमेंट के लिए जाए. So two methods are recommended. You can see on the slide. One is direct addition or dilution method, and second is solid liquid separation. So direct addition या dilution method वहां possible है जहां पे कि आपने अर्बन रूरल कन्वर्जेंस प्लान की है एंड द क्वांटम ऑफ द स्लज इज वेरी लेस, देन यू कैन डू. आपको सीवेज पंपिंग स्टेशन तो पता ही है दैट एसटीपी से पहले एक एसपीएस होता है ताकि वहां पे पूरा कंट्रोल किया जाता है कि कितना सीवेज आगे ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी पे जाएगा. तो डायरेक्ट डाइल्यूशन मेथड आपका फीकल स्लज जो कलेक्टेड है स्मॉल क्वांटिटी में उसको एसपीएस या सीवेज पंपिंग स्टेशन में डाल दिया जाता है, वो मिक्स होके आगे ट्रीटमेंट के लिए जाती है. ऑल्सो नेक्स्ट सॉरी, तो दिस इज सॉलिड लिक्विड सेपरेशन मेथड. यू कैन सी यहाँ पे एक प्री ट्रीटमेंट यूनिट जस्ट लाइक अ प्लांटेड ड्राइंग बेड भी बनाया जा सकता है एसटीपी पे, जहां पे कि आपका सॉलिड पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है एंड द लिक्विड पार्ट विल गो इन द सेम stream of STP for treatment, that is primary secondary treatment. किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी है STP में जैसे अफ्लो, एनारोबिक फिल्टर, SBR या क्लैरिफायर, वहां पे आपका लिक्विड पार्ट विल गो फॉर ट्रीटमेंट. सॉलिड पार्ट आफ्टर ड्राइंग इट शुड गो इन द स्लज ड्राइंग बेड जो कि STP पे अवेलेबल है. तो इस तरह से को ट्रीटमेंट जो है वो फिजिबल है under urban rural convergence. Also, we want to reiterate again that your provisioning of 230 per capita is available to plan convergence with urban and do the implementation for fecal sludge treatment plants. We'll just show you one quick video that how the co-treatment is done in Haryana. Swachh Bharat Mission brought toilets to millions in Haryana.
But while it solved one challenge, another was lurking just beneath the surface. Haryana, 70% of households depend on single pits or septic tanks that must be emptied regularly. Without a safe system for desludging and treatment, this waste often ended up in fields, rivers, or open land. To ensure proper sanitation, fecal sludge should be collected, transported, and treated responsibly. With this goal, the challenge was the size of the problem. The solution? Co-treatment, where fecal sludge can be safely treated at existing sewage treatment plants, along with regular wastewater. By using what was already built, Haryana could manage fecal sludge across thousands of villages, quickly, safely, and cost-effectively. To make the best use of existing infrastructure, 120 STPs were carefully selected across Haryana for co-treatment. These plants were operating under capacity, making them ideal for handling additional fecal sludge. With the villages mapped and suitable STPs identified, the next crucial step was ensuring that the fecal sludge is safely collected from the villages and efficiently transported to the STPs. Thus, the success of this entire FSM system depended on one key group, the desludging operators. They were key to making the system work, but unregulated practices, poor wages, and lack of recognition left the system exposed. Recognizing this, all the key players were brought together to build a system that's fair, transparent, and built for trust. To bring order and accountability, desludging operators were registered on a dedicated digital platform. This ensured that only licensed operators equipped with identity cards, trained in safety protocols, and following all environmental regulations could collect and transport fecal sludge. Operators were also required to maintain logbooks, use mechanical equipment, and wear PPE, making the entire process safer and more professional. The result? A system that not only protects public health and the environment, but also gives operators the dignity, recognition, and support they long lacked. The system was now live across Haryana. Let's see how it's working on the ground. It begins with a request. A household calls a toll-free number to book desludging. The request is logged and assigned to the nearest registered operator. A trained, registered desludging operator equipped with safety gear and a vacuum truck arrives and performs a hygienic sludge removal, preventing leaks, odors, and health risks. Every detail is logged: the time, location, and volume. The operator then follows a designated route to the nearest co-treatment facility, preventing spillage and environmental hazards. The journey is also monitored to ensure compliance and accountability. At the co-treatment facility, the sludge is unloaded into a designated area and undergoes a controlled treatment process where it is integrated with the existing sewage for further processing. Each step from collection to treatment is recorded and monitored. This is fecal sludge management in action: efficient, regulated, and working for people, for health, and for the environment. What began as a plan is now a functioning, impactful system, transforming sanitation across. Yeah, so that was how the co-treatment at STP is established in the state of Haryana. That was just a case study. So please pay attention to this slide. These are the important modules we are showing for the newly joined mission directors for their kind reference also, that we have to do our planning and implementation, and we have to refer and report these IMIS modules. So number one step is updation of toilet typology in module 67C, and this will be closing by 15th of July 2026. Also, where you retrofit your single pit to twin pit, this updation can be reported at 67R. The important module is 36A and 36B, which will be showing you. 36A capture all the infrastructure, and 36B where you do your compliance, that your village is FSM compliant, you declare in module 36B. This is the last module which close all the loops, and your village will declare itself as FSM compliant. So please
pay attention here. So this is the infrastructure module 36A. आप अगर अर्बन रूरल, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिटेल्स फिल करने हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी कौन सी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं। अर्बन है, व्हेन बाय अर्बन व्हाट वी मीन इज कि अगर आपने अपनी प्लानिंग एग्जिस्टिंग या प्लान्ड एसटीपी के साथ की है, देयर यू हैव टू मैप दैट डिटेल्स in the urban circle. Also, we have given login details to all the states and UTs for reference of the new mission director. We will again share those credentials so that you can log in your state and UT and see that what urban infrastructure is available for co-treatment. Finally, if you are planning your compliance by doing a रूरल एफएसटीपी, देन रूरल के अंदर क्लिक करके आप अपना रूरल एफएसटीपी जो आपका कंस्ट्रक्ट हो गया है उसे रिपोर्ट करते हो। देन वंस द रिपोर्टिंग इज डन इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ऑल योर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस मॉड्यूल में कैप्चर हो जाता है। यहां पर जाकर 36B, अगर आप अभी स्लाइड पे काइंडली पे अटेंशन, इसमें आप अपनी कंप्लाइंस शो करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पंचायत एंड विलेज आप जब सिलेक्ट करोगे, जो टाइपोलॉजी आपने 67C की भरी है, फिल की है, अपडेट की है उस पर्टिकुलर विलेज के लिए, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 87 टोटल टॉयलेट्स रिपोर्टेड हैं इस विलेज के अंदर, जिसमें से 47 आपके ट्विन पिट हैं, 40 सेप्टिक टैंक बेस्ड हैं। तो आप देख पाएंगे कि कॉलम नंबर 6 में अगर ये टोटल एफएसएम मतलब ट्विन पिट हो या अदर कैटेगरी में हो, इन सीटू ट्रीटमेंट है, सभी 87 अगर ट्विन पिट होते तो ये परसेंटेज 100% होती। आपको वहीं पे बटन जो है वो क्लिक करने का आ जाएगा, डिक्लेयर योर विलेज एज एफएसएम कंप्लायंट इफ इट इज 100%। अगर आपके उस विलेज के अंदर सेप्टिक टैंक बेस्ड टॉयलेट भी है तो आपको नीचे वाला जो पॉपअप है वो ओपन होगा। उसमें आपने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां ये विलेज फॉल करता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किया है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, वो कॉलम नंबर 5 को सिलेक्ट करने के बाद आपको रिफ्लेक्ट होंगी। आप वो विलेज उसके साथ टैग करोगे एंड देन यू विल डिक्लेयर योर विलेज एज एफएसएम कंप्लाइंट। अब इसको अगर मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में समझाऊं तो 87 टोटल टॉयलेट थे, जिसमें से 47 ट्विन पिट है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इन सीटू ट्रीटमेंट है। तो बाकी 40 को आपने लिंक कर दिया ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ। वो अर्बन रूरल कन्वर्जेंस भी हो सकती है, वो जो है वो रूरल एफएसटीपी भी हो सकती है। उसको लिंक करने के बाद आप अपना विलेज एफएसएम कंप्लायंट डिक्लेयर करोगे। नेक्स्ट, ये एडवाइजरी है, ये आप काइंडली रेफर करिएगा फॉर डिक्लेयरिंग द एफएसएम कंप्लाइंट विलेज। Also, there is another important and significant ask from the states and UTs to prepare and notify their FSM policy. Ministry has issued contours in, for declaring the FSM policy on 24 December 2024. इसके अकॉर्डिंग आपके सारे कंटूर्स विच आर डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ सर्विसेज अक्रॉस एफएसएम वैल्यू चेन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। सो स्टेट को अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट करके नोटिफाई करानी है। दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट आस्क फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूटीज. So our request to all the participating states and UTs to please pay attention to this ask of ministry also. These are the available resources which we have talked about the FSM manual, brochure, flipbook, videos, all are available on these links. PPT हटाइए। रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, सिर्फ स्क्रीन कर दीजिए। So we request, please let us know any doubt, any understanding gap, or anything you want us to focus or clarify more. We have Puducherry.
Sir, any doubt regarding the FSM planning and implementation? No, madam. I understand. Okay, sir. So kind attention, please, for the toilet typology updation and declaring the FSM compliance also. So we understand that in Puducherry there were two FSTPs which were planned from last 2 to 3 years but never executed, sir. Kind ma'am. attention, sir. This is the last year of Swachh Bharat Mission Grameen. The funds are available to all the states and UTs. These funds won't be available, and sir, if we have to execute all the work effectively, we have to do our tendering and DPR preparation right now. Otherwise, sir, the construction will also take another 6 months. So our request to all the participating states to please progress what you have planned in your AIPs for rural FSTPs for co-treatment at STPs also. Yes, madam. For 1 year to be work order was issued, madam. Work is to be on progress, madam. And another FSTP tended to be called for. Within a week or 10 days, it tended to be quoted. Please expedite, sir. Yes, madam. Andaman and Nicobar Islands are there. Anybody from Andaman? Okay. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Ma'am, anything you want us to focus more or clarify? Ma'am, we many of your officers maybe they reached out for support in terms of DPR preparation. Also, we have shared the relevant manual and guidelines. Also, we hope that Andaman is progressing well in terms of implementation. Yes, ma'am. We are there to support in case of any technical support is required to any states or UT. Yes, ma'am. Please reach out to us. Yes, ma'am. Any other question or clarification? Ma'am, one query regarding, ma'am, the co-treatment units operation and maintenance, ma'am. Ma'am, the STPs are in urban areas, and the 15th Finance Commission guidelines won't allow to utilize that funds for an STP in the urban area or its O&M of a co-treatment facility. Neither there are any funds for O&M for SBMG. Then which fund will be utilized for, ma'am, operation and maintenance of a co-treatment facility in rural area in the STP? You know it very Because the well. main issue is of the O&M. Construction will be done, but there will be no funds for available for its running. So मैडम इसमें कोई SBMG So for all the central supported schemes, the O&M was never be a component. This is a component which support all the components which are part of SBMG. They support the implementation also, and obviously the whatever planning support is provided from SBMG that has to be executed. Right now in the current phase, there is no such provision. Okay, ma'am. Any other doubt? Okay, sir. Thank you very much for attending this session, and we hope that there is a progress in all the participating states and UTs also. And we are there to support for any technical reference, technical guidance, or technical document also required. Please try to cross learn also from the states which have already in the advanced stage of implementation. So we will share the phone number also in the chat. In terms of, we will share our numbers, phone numbers also. Please reach out to us for any support or guidance in terms of any planning hurdle you feel that this is not clear. Please, the IMIS issues, if any state or UT is facing, you are part of the IMIS group. If this is a hurdle or technical glitch in the portal is
putting you in constraint of reporting your progress, please flag those issues in the IMIS group. Apart from that, in terms of planning and implementation support, we are there to support with all our, let us know if you need any further help. So we are sharing our phone numbers in the chat. Please reach out to us for any support. Thank you very much. Ma'am, can also you share this PPT with videos, ma'am, which was shared right now for the Sure. training of districts? Sure, we will share. Thank you. Okay, thank you. Thank you, everyone. Thank you, madam. लिख दो 9 मेरा और अपना डाल दो. Nine 79138. नाम भी लिखते हैं. हाँ, अपना भी डाल दो. Close.